Hi guys, welcome back to our channel. एंड हम पहुंच गए हैं शोगी जो शिमला से 30 मिनट दूर है. टुडे इज आवर वेडिंग एनिवर्सरी. तो वी वर सर्चिंग फॉर सम ऑफ बीट लोकेशन. तो हमने देखा शिमला से हट के कुफरी. बट देन जब हम प्रॉपर्टीज ढूंढने लगे तो वहाँ पे भी बहुत सारी बिल्डिंग्स थी. तो हमारा माउंटेन व्यू नहीं था बट इंस्टेड इट्स लॉट ऑफ बिल्डिंग व्यूज. तो देन हम ढूंढते 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 कहाँ पहुँच गए? Shoghi. शोगी. And the resort which we are staying in is Oakwood's Hamlet resort. So let's go inside and we'll give you a small tour of this beautiful resort. So this is the entrance. You can park your car there. There's lot of parking. And पहाड़ों में सबसे ज़्यादा इशू होता है पार्किंग का. You have got lot of parking. Parking issue बिल्कुल भी नहीं है. Enter करते ही there is this activity area. See the tires you can climb here. There is this so adventure भी है यहाँ पे. And then let's go further inside. So at last we have entered the main resort area. ये है reception. This is the reception. You'll get a warm welcome here. Along with warm welcome, you'll get welcome drink, colorful ones. Thank you so much. Wow, yum. As I already said कि कहाँ जहाँ भी खड़े हो जाओ यहाँ पे व्यू है. Even the entrance पे and यहाँ से भी. Along with reception, this is also a game zone and यहाँ पे you can play Ludo. Alright. They even have the option of chess. And here you can play carom with your buddies. And the most favorite part of mine is this pool. So this is the bar area where there is no bottles right now, but you can get your own bottles of course. And we have table tennis. So here also again the view. So reception से बाहर आते ही we get this common area, this beautiful one where you can sit, where you can chill, you can have sun bath here, you can have tea coffee here in the morning and enjoy the view. So ये property already इतनी pretty है पर when you will come after March के आप ending में and October तक ये पूरा एरिया विल बी फिल्ड विथ ग्रीनरी एंड फ्लावर्स. ये पूरा जितना भी एरिया दिख रहा है वो पूरा ग्रीन होगा. आपको ओस दिखेगी. मैं उसकी फ़ोटोज़ अटैच कर दूँगी एंड दिस प्लेस विल लुक लाइक हेवन. लेट्स गो टू द डाइनिंग एरिया. ये देखो स्विमिंग पूल उस साइड है. हियर इज़ द डाइनिंग एरिया. ये है इंडोर डाइनिंग एरिया. लेट्स हैव अ लुक इनसाइड. सो व्हेन यू विल कम विद द फैमिली यू कैन हैव ब्रेकफास्ट एट योर रूम और एल्स हियर. We always prefer to have our breakfast or food outside the room because property का हर हिस्से को enjoy करो. And this is the outside sitting area. तो इस जगह की एक और attractive चीज़ है. तो वहाँ पे जो trails दिख रही हैं आपको पीछे, तो वहाँ से जो शिमला टू कालका टॉय ट्रेन है वो दिखती है यहाँ से. And जब वो आएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी. See, there can you see the train? This one. That's Kalka to Shimla toy train. So जहाँ दूसरे हिल स्टेशंस में आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा, you will get to see the cars and you can hear the car honking. यहाँ पे आपको दिखेगी toy train जाते हुए. After the common area, let's go take a tour of the rooms. तो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है डुप्लेक्स. थैंक यू. लुक एट दिस ब्यूटिफुल वुडन हट. ओह वाओ, सो प्रिटी. एंड लुक एट द व्यू. And here is your dressing table, your working station,
and there comes the duplex. And here is the storage area. All the room comes with a good storage area, you know. तो अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए भी आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत ample space है स्टोर करने के लिए. And this is the washroom. This is the shower area. And this is the big mirror. Now let's check out the other category जो है villa. This is our villa. That is the common sitting area, and this is your cleaning area. Villas में 3 रूम है, not just 2. And this is the first bedroom. Which comes with a balcony. Balconies are my weak spots. This is the washroom. Let's go to the second room. This is the second room. This also comes with an attached toilet bathroom. यहाँ से भी view है. Now let's go to the third room. This is the master bedroom. Again, all the rooms comes with the heater. Now let's go to the balcony. The balcony and the view. They have a very extended menu. हर टाइप की चीज़ें हैं, जूस से लेके मेन कोर्स, साइड डिश, एवरीथिंग यू गेट. तंदूर selections, continental also you get here, oriental fare, all day dining, desserts, you also have desserts, you have cheesecake here. So this was about the villa. आपकी फैमिली आ रही है या आप फ्रेंड्स ग्रुप के साथ आ रहे हो, और इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बैचलर्स पार्टी और बैचलरेट, this is your place, away from the hustle bustle, and just have fun. Let's look at the last category, which is executive room. And this is the third category. The executive room. All the rooms are so beautiful, it is so difficult to choose from. And इस room में है एक sitting area, the beautiful bed, and this is the working station, also the TV, and again ample space for storage. Here also, here you can keep your luggage. All these executive rooms comes with a sit out. सबके सामने चेयर्स हैं, छोटी सी balcony है क्यूट सी, so you can have fun there. So these all are executive villas, executive rooms. There are total 8 executive rooms, and there are 3 villas and 2 duplex rooms. So the trees which you can see here, these are cherry blossom trees, and they'll blossom in a month or 2. And they look spectacular, and this is the whole property, the view, the property. All the rooms comes with a view. ऐसा कोई यहाँ पे रूम नहीं है जिसमें आपको डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि अच्छा ये कम पैसे का है तो इसमें you will not get the view, but all the rooms comes with very beautiful view. And this is where we are staying. This cute little 203 is our dog. एंड यहाँ पे ही हमने बैठ के सुबह की चाय पी थी. वी हैड अ ब्रेकफास्ट हियर. And here you can chill with your friends, your family. You can sit here. You can enjoy the sunset. यहाँ से बहुत ही beautiful sunset दिखता है.
ये देखो इनमें छोटे छोटे से फूल आए हुए हैं and after a month they'll be full of these flowers. Imagine how heavenly beautiful this place would look. So this was all about this beautiful resort and ये तो दिन का व्यू था. रात में ये रिजॉर्ट और भी सुंदर लगता है. यहाँ पे सारी लाइटें जग जाती हैं. एंड हम इधर इसीलिए आए बिकॉज हमें अपनी दिल्ली की डेली हसल बसल से थोड़ा सा दूर जाना था. वी वांटेड टू एक्सपीरियंस काम, शांत वेदर, ठंडा. ये हमने हाफ स्लीव से नहीं है एंड इट इज़ नॉट सो कोल्ड ओवर हियर इन द डेज, बट रात को अच्छी खासी ठंड हो जाती है. एंड यू कैन टेक अ डिप इन द पूल ऑल्सो. एंड ये जगह तो दिन में आपको दिखाई बट रात को दिस प्लेस लुक्स इवन अमेजिंग. यहाँ पे बहुत सारी फेरी लाइट्स लगती हैं एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. रिजॉर्ट इज़ नॉट जस्ट मेड फॉर कपल्स. यहाँ आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं. जैसे कि चंदन ने बताया, यू कैन इवन बुक इट फॉर योर बैचलरेट्स, क्योंकि फॉर बैचलर्स to enjoy their last time before marriage is the thing for what they look for. And यहाँ पे हर चीज़ है, हसल बसल से दूर है. You can enjoy your days in the pool, play zone, game zone, and the nights in your rooms and the common areas. Yes, you can have bonfire also. रात को इतनी मस्त लाइटिंग हो जाती है. Yes. You can sit over here, bonfire लगाओ, अपना mild सा music लगाया and you can enjoy that time also. And even the food is so delicious. Yes, absolutely. Food was very delicious. Best part for the breakfast which I ordered was bread omelette. Fluffy. इतना fluffy bread omelette very था. tasty. स्वादी. And this place is dog friendly also. यहाँ पे इनका भी owner एक का खुद का एक dog है, Peter. You can come and meet German him. Shepherd. के जो local dogs हैं, street dogs हैं, street dogs नहीं, लोगों ने पाले ही हुए हैं वो जो इंडी डॉग्स हैं. They are also very beautiful and fluffy people. Yeah, very beautiful. Even you can bring your pets as well. Yes, you can definitely. So it's a whole package. Yes. So do come here.